दोस्तों इस वीडियो में आपको आरसी टॉय कार का टीयर डाउन करके दिखाने वाला हूं और अगर आपको इसमें कुछ इशू आता है तो आप उसे किस टाइप से इजीली रिपेयर कर सकते हैं या पार्ट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं आपको इसके अंदर का जो सर्किट डिज़ाइन है उसका रिसीवर और ट्रांसमीटर का दोनों का सर्किट डिज़ाइन का लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप बेस्ट बजट वैल्यू फॉर मनी प्राइस में उन्हें वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पर दोनों रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, इसके कंपोनेंट हमें इस टाइप से देखने को मिलते हैं। और ये प्रोडक्ट सही से वर्क कंडीशन में था। इसको ओपन करने का रीज़न ये था कि इसमें जो कोयल थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो कोयल को अच्छे से सेट करने के बाद मैंने इसे वापस असेंबल कर दिया, तो प्रोडक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। कभी कभी कोयल डिस्टर्ब होने की वजह से रेंज में इशू आता है, तो आप हमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर में दोनों में सेम जो पार्ट कंपोनेंट दिख रहा है जिसमें हमें कॉपर वायर देखने को मिलता है राउंड शेप में, तो वो कोयल है। तो आप इसे एक बार सेट कर लें, उससे इसकी रेंज सेट होती है। और आपको अगर कोई इशू देखने को मिलता है तो आप सर्किट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उनके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस टाइप से हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपने भी इस टाइप से किसी आरसी प्रोडक्ट का पार्ट रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग किया है तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Trying to tell you that me just doing